Greeting, guys. So we're back with another one. So first of all, let's read the question. Okay. So the question given here is alpha is equals to e to the power 2 pi iota divided by 5. So हम लोग को सबको पता है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है. Alpha is nothing but alpha is the fifth root of unity. Okay. Fifth root of unity. So we can infer that alpha to the 5 is equals to 1. Now here is given M. M is here a 5 cross 5 matrix. Okay. And we have to find out the trace of identity matrix. We have to find out the trace of I plus M square. Okay. अच्छा, trace of I plus M square अगर निकालना चाहिए ये वाला क्वेश्चन में, so we already know that trace, this can be written as trace of I plus trace of M plus trace of M square. Okay, we can write it like this. अच्छा, trace of I क्या होता है? Trace मतलब क्या? Sum of the elements of the diagonal. Okay, so आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में क्या होता है? वन 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 ऐसा एंट्री होता है और सब तो जीरो होगा. एंड वी डोंट इवन केयर, डायगोनल्स में तो वन होता है. सो अगर इधर में प्लस एम स्क्वायर दिया हुआ है, सो आई दिस इज अ I here is a 5 cross 5 matrix, and hence trace of I will be nothing but only 5. Similarly, trace of M तो इधर दिया हुआ है, क्वेश्चन में M दिया हुआ है. सो ट्रेस ऑफ M क्या होना चाहिए इस केस में? Sum of the diagonal entries. Okay, sum of diagonal entries here. So that is nothing but 1 plus alpha square plus alpha cube plus alpha to the power 4. Now, by complex numbers property, we already know that the sum of this element should be equals to 0. So we are done with second also. So trace of identity अपन लोगों को मिल गया, trace of m भी अपन लोग को मिल गया. Okay, so the last part is trace of m square. और इधर में इस क्वेश्चन को बना दिया जा रहा है लेंदी. ये m स्क्वायर आप लोगों को आराम से कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, टू स्कोर द फुल मार्क्स हियर. ओके, सो ट्रेस ऑफ m स्क्वायर. अच्छा, अगर हम लोग ऑप्शन भी इधर में थोड़ा सा चेक कर लेंगे, सो हियर आर टू ऑप्शंस. A is -5 0 3 5. सो अभी ऑप्शन से पहले से हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स जस्ट कंप्यूट इट. सो मैंने तो ऑलरेडी इसका कंप्यूटेशन करके रखा हो, but if you do this computation, it is a lengthy one. This computation will be a lengthy one, but you can find out that the trace that m square, this matrix m square will be like this one. M square is, this will also tend to be a upper diagonal matrix. Okay, upper diagonal matrix, और इसका एंट्री ऐसा होगा 1 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर थर्ड एंट्री होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4. फिर इधर में होगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5 अल्फा टू द पावर 6 अल्फा टू द पावर 7. ओके, ऐसे करके जाएगा इसका सब एंट्रीज. नाउ ऐसे करके हम लोग अगर जाएंगे, अच्छा ये वाला पोर्शन जस्ट एक चीज हो गया. इधर में अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 और इधर में इसके बाद होगा अल्फा 3. जस्ट देखो ये अल्फा, इसके बाद अल्फा स्क्वायर, इसके बाद अल्फा क्यूब, ऐसे करके जा रहा है. ओके, अल्फा टू द पावर 4 अल्फा 5 अल्फा 6, और आप लोगों को ऐसे समझ आ जाएगा जो नेक्स्ट एंट्री जो होगा वो अल्फा 4 का होगा. अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6 प्लस अल्फा 7 प्लस अल्फा 8. सो ऐसे करके हम लोग अगर कंप्यूट करेंगे, सो लेट मी जस्ट फिल इन द एंट्रीज. ये जस्ट इस क्वेश्चन का सबसे लेंदी पोर्शन होगा. 0 0 0 0, फिर इसमें आएगा अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट में आएगा इधर में
अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, फिर नेक्स्ट में इधर में आ जाएगा अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6। देखो ये वाले एंट्री के साथ अल्फा स्क्वायर इसके साथ अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। इसके साथ अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। इसके साथ अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पोर्शन आ जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ भी अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेके ऐसा बन जाएगा ये अल्फा 5 प्लस अल्फा 6 प्लस अल्फा 7 प्लस अल्फा 8। ओके, ऐसा बन जा रहा है इसका एंट्री। नेक्स्ट इधर में जीरो, फिर से इसके साथ अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया अल्फा टू द पावर 4। ओके, सो अगर आप लोगों इस मैट्रिक्स को ऐसे करके सही से ऑब्जर्व कर लोगे तो इधर में आ जाएगा अल्फा 6 और लास्ट में आ जाएगा अल्फा 8। ओके, सो डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा 6 एंड अल्फा 8। सो 5 एंट्री मिल गया हम लोगों का 5x5 मैट्रिक्स में। we got the 5 entries of the diagonal. Okay, so if we got the 5 entries of this diagonal, so we can just add it up right now. So adding it up, we are getting 1 plus alpha square plus alpha 4 alpha 6 plus alpha 8. अब अल्फा क्या था, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी था अल्फा। अल्फा हम लोग का फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी था। हेंस वी नो दैट अल्फा 5 इज इक्वल्स टू 1। हेंस अल्फा 6 क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा क्यूब क्या बन जाएगा, सॉरी अल्फा टू द पावर 8 क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब। ओके, एंड हेंस दिस क्वेश्चन इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा क्यूब। एंड दिस माय फ्रेंड trace of m square is again nothing but 0. Again nothing but 0. Okay, the magic of linear algebra, the magic of matrices. Okay, and hence इधर में भी trace आ रहा है 0. So we are getting 5 plus 0 plus 0, which is equals to 5 here. Okay, and hence, my friend, we again solve this question of trace, and the answer is 5. So, this was a very nice question, easy one, but इधर में बस m स्क्वायर का हम लोगों को करना पड़ेगा कंप्यूट। और जब हम लोग को इधर में पैटर्न मिल जाएगा ना, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4, उसके बाद और कंप्यूटेशन का भी जरूरत नहीं है। ये अल्फा 6 अल्फा 8 ये आप लोग समझ पाओगे। एंड सो by this method we have solved this question. So thank you for today guys. मैं एक बार शॉर्ट कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, आप लोग पूरा कंप्यूटेशन देख लो इसमें। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।